Hi friends, welcome back. Today's topic is inverter. Inverter is DC to AC converter. In this, we see first voltage source inverter. In voltage source inverter, that is VSI, we classify as two inverter. First is square wave inverter and second one is PWM inverter. In this VSI, first we see single phase half bridge inverter with R load with RL load. Then we will see single phase full bridge inverter with R load with RL load. Then we will see three phase inverter VSI 180 degree mode, 120 degree mode. Then we will see PWM inverter. What will be the disadvantage of square wave inverter and how we nullify by using PWM inverter. Then we will see current source inverter. Okay, this will be the introduction. So first we see the introduction of VSI and CSI. VSI. Okay. So VSI is generally used for inductive load and CSI is generally used for capacitive load. What will be the circuit diagram? Basic. A voltage source will be there which is DC side and a capacitor is used. This capacitor is used to limit voltage fluctuation. Now a switching device will be there which will be like this, a switch and an anti-parallel diode. Then a load is connected which is basically inductive in nature. So it is like RL load. Okay. So anti-parallel diode is used for reversing current direction. Okay. Now see, positive power we will achieve by considering voltage as positive and current as positive, and we get negative power by considering voltage as positive and current as negative. So we will reverse the direction of current by using anti-parallel diode. Now see what will be the nature of this switch. So in this, voltage is positive, so forward blocking, and current is positive, forward conduction, and current is negative, reverse conduction. So this will be the modes the switch should follow. So for reverse conducting we achieved by anti-parallel diode. So these two modes we will achieved by using BJT or IGBT. So BJT or IGBT is the switch we are using in VSI. Now see, in
CSI, what will be the construction? So a voltage source with a high value of inductor, we will get a current source. Okay, now here we cannot change the direction of current, so in this we will change the direction of voltage to achieve negative power. And the load is basically capacitive. Okay, so in this we will achieve positive power by taking voltage and current as positive, and negative power by voltage as negative and current is positive. Okay, so in this we will use forward biased, reverse biased and forward conduction. These modes can be achieved by using SCR. So SCR will be the switch we are using in CSI. Okay, now see one more thing. Here we use capacitor to limit the voltage fluctuation. Okay, so that's why we are using inductive load here, so that power factor is good. Similarly here we are using inductor to get constant current. So here we use CSI for capacitive load, so that power factor should not worsen. Okay, so that's why we use CSI for inductive VSI for inductive load and CSI for capacitive load. Now see, we will start VSI. First topic is single phase half bridge inverter. So the diagram will be like this. Vs by 2 for R load. We will see first of all for R load. A switch S1, anti-parallel diode D1, and here we write bridge, so we will make a bridge. Negative, positive, voltage across load is V0 and current through load is I0. A switch S2 and an anti-parallel diode D2. Now see, let this is A1, A positive, and this is A negative. Let, so we get positive power and negative power. So when S1 in A plus, when A plus is operating, we get positive power when S1 is operating, and negative power when D1 is operating. Similarly, when A negative is operating, we will get positive power when S2 is operating and negative power when D2 is operating. Now see what will be the waveform of V0. So V0, first of all, it is going through S1 and complete the loop by passing through load. So V0 is, in first case, let's consider drop across switch is 0, so V0 is equal to Vs by 2. Okay, now after this point we operate this Vs by 2 and this is flowing like this,
so current is in opposite direction, so V naught is minus Vs by 2, minus Vs by 2. V naught is this and I naught is what? I naught is V naught by R. So Vs by 2R, Vs by 2R, and there will be no lag or lead because it is a RL load. So it is like this. I naught is like this. Vs by 2R and minus Vs by 2R. So in this Cn is what? 4x by n pi, 4x by n pi. So it is 4x here is what? Vs by 2, Vs by 2 and n pi. So it is 2 Vs by n pi. So we can write V naught is summation of n is equal to 135 to infinite Cn sine n omega t. So Cn is what? 2 Vs by 2. So 2 Vs by 2 n pi sine n omega t from n1 to 135 to infinite. Okay. Now Von is equal to 2 Vs by n pi sine n omega t. So Vo1 we can write root 2 Vs by pi, and Vor we have how much? Vs by 2. So G is what? Vo1 by Vor. So root 2 Vs by pi upon Vs by 2. Vs cancel. So how much it will? 2 root 2 by pi. That is approximately 0.9. So THD is 1 by G square minus 1. So it is 48.34%. So total harmonic distortion is 48.34% in single phase half bridge rectifier. Now we will see single phase half bridge inverter with RL load. So in this we will see S1 and S2 is operating. Only S1 and S2 is operating. In positive cycle S1 is operating and negative cycle S2 is operating. Now in this RL load we will see circuit diagram will be like this. Vs by 2 same except the load, that is RL. This is RL load. Okay, this is the only change. In this S1 S2 D2 like this. This is the switch. Now V node will be same as R load, Vs by 2 minus Vs by 2 like this. Now for current we categorize the load in 4 types. First is pure L load, RL load, RLC overdamped and RLC underdamped.
Okay, now see, फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर एल लोड। प्योर एल लोड में क्या होगा? प्योर एल लोड है, प्योर इंडक्टिव लोड है, तो करंट कैसा होगा? सो करंट इज लैगिंग, लैगिंग एंड like this, positive cycle it is increasing, slope will be positive, then decreasing like this is the waveform. So in case of pure inductive load, current waveform is like triangular pulse. Okay, so pure load में कितना डिग्री लैग होगा? 90 डिग्री लैग होगा, 90 डिग्री लैग, pi by 2, 90 degree. So here we see current is negative, voltage is positive, means power is negative. So which is operating? D1 is operating, D1 is operating. Voltage is positive, current is positive, power is positive, and in positive cycle, so S1 is operating, S1 is operating. Current is positive, voltage is negative, power is negative, so in negative cycle, so D2 is operating. Voltage is negative, current is negative, power is positive, um, cycle in negative, so D2, S2 is conducting like this for pure L load. If the load is RL load, so current is lagging but not 90 degree, less than 90 degree. So waveform will be, current will be exponential increasing first of all, then exponentially decreasing, increasing like this. This is 5, 5, 5. Here power is negative, so D1 is operating, and here power is positive, so S1 is operating. Similarly, D2 is operating, S2 is operating. Okay, so this is the case for RL load. RL load. So after reaching steady state, I naught lags V naught by 5 rad. Phi is equal to how much? Tan inverse omega L by R. ठीक है, फर्स्ट मोड में क्या होगा? S1 ऑन, सोर्स टू लोड, ठीक है, डेट इज आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और आई स्क्वायर आर, और कहाँ जाएगी एनर्जी? हाफ एल आई स्क्वायर में, ठीक है. सो यहाँ पर आई क्या होगा? आई यहाँ पर इंक्रीज होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, सो एल इज इंक्रीजिंग, आई इज इंक्रीजिंग, डेट इज एल स्टोर्स एनर्जी, मीन्स एल यहाँ पर एनर्जी स्टोर करेगा. नाउ अब क्या होगा? सेकेंड मोड में क्या होगा? D2 ऑन होगा, सो पावर कहां से जाएगी? लोड टू सोर्स, पावर फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स. सो हेयर हाफ एल आई स्क्वायर डिक्रीजिंग, मीन्स एल इंडक्टर रिलीजिंग एनर्जी. थर्ड मोड देखें, थर्ड मोड में क्या होगा? थर्ड मोड में like Vs circuit will be like this, Vs by 2, S1 D1,
S2 D2। ओके, यहां पर क्या होगा, S2 ऑन होगा, S2 ऑन होगा, सोर्स टू लोड, अगेन हाफ एल आई स्क्वायर। बट इन दिस फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, पॉजिटिव आई इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पर नेगेटिव साइड में आई इंक्रीज होगा, नेगेटिव साइड में आई इंक्रीज होगा, ठीक है। डेट इज एल स्टोर्स एनर्जी। देन फोर्थ केस में क्या होगा, देखिए यहां पर ऐसा, ठीक है। फोर्थ मोड में क्या होगा, फोर्थ मोड में इंडक्टर क्या करेगा, रिलीज एनर्जी करेगा, ठीक है। तो करंट डिक्रीज होगा, ठीक है, नेगेटिव करंट डिक्रीज होगा। सोर्स, लोड टू सोर्स पावर जाएगी, लोड टू सोर्स पावर जाएगी ऐसी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर D2 कंडक्ट करेगा, D2 ऑन होगा, सॉरी D1 ऑन होगा, लाइक दिस, D1 ऑन होगा, एंड यहाँ पर हाफ एल आई स्क्वायर माइनस आई डिक्रीज होगा, इंडक्टर एल रिलीजिंग एनर्जी। देखिए फिर से समझते हैं, पहले मोड में क्या हुआ, यहां से S1 के थ्रू, इंडक्टर के थ्रू करंट पास हुआ, इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी, ठीक है। S1 के थ्रू हुआ, इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी। अब देखिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, करंट का डायरेक्शन चेंज, सो इट इज रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम दिस वे, सोर्स एंड D2, ठीक है। सो सेकेंड मोड में ये होगा। एंड थर्ड मोड में ये वाले सोर्स से S2 के थ्रू इंडक्टर चार्ज होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, ठीक है, एनर्जी स्टोर करेगा इंडक्टर। देन अगेन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, देन यहाँ पर इस वाले केस में इस वाले D1 से अपनी एनर्जी सोर्स में रिलीज करेगा। सो दिस इज द फोर मोड, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ लोड इज RLC, ओवरडैम्प्ड, RLC ओवरडैम्प्ड, ठीक है। सो इसमें I नॉट लैक्स V नॉट बाय 5, डेट इज tan इनवर्स। इसमें ओवरडैम्प्ड है तो XL माइनस XC बाय R। एंड RLC ओवरडैम्प्ड केस फोर्स्ड कम्यूटेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इफ द स्विच इज SCR। अगर स्विच SCR हमने ली है तो क्या होगा, हमें फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। BJT IGBT के साथ साथ, BJT और IGBT के साथ साथ हम अगर वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा है तो हम SCR भी ले सकते हैं, और अगर SCR हमारे पास है तो हम फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा फॉर किसके लिए, RLC ओवरडैम्प्ड और RL लोड के लिए, ठीक है। दिस विल बी द थर्ड केस, ओके। सो RLC ओवरडैम्प्ड के लिए भी सेम आएगा, बट करंट की वेव फॉर्म थोड़ी चेंज हो जाएगी, लाइक साइनोसोडल ये रहेगी, लाइक दिस। D1 यहाँ पर कंडक्ट करेगा, व्हेन पॉजिटिव S1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट करेगा, यहाँ पर S2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो करंट वेव फॉर्म विल बी लाइक दिस। नाउ फोर्थ केस इज RLC अंडरडैम्प्ड, RLC अंडरडैम्प्ड, ठीक है। सो RLC अंडरडैम्प्ड के केस में करंट की वेव फॉर्म लीड करेगी, ठीक है। यहां पर S1 ऑपरेट करेगा, D1, S2, यहां पर D2, ओके।
नाउ सी, अब यहाँ पर लोड कम्यूटेशन पॉसिबल है। कौन सा केस के लिए लोड कम्यूटेशन पॉसिबल है अगर ये कितना होगा, ओमेगा टी सी मानते हैं इसको, ठीक है। फाई इज ओमेगा टी सी एंड ओमेगा टी सी कितना हो जाएगा, 5/ओमेगा, और फाई कितना है हमारे पास, 1/ओमेगा tan इनवर्स XC माइनस XL/R, ठीक है। सो यहाँ पर ये टीसी सर कि टर्न ऑफ टाइम, अगर टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा होता है तो यहाँ पर लोड कम्यूटेशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो अंडर डैम्प्ड के केस में लोड कम्यूटेशन पॉसिबल है, ठीक है। देखिए वोल्टेज का एक्सप्रेशन तो हमने निकाल लिया था, वी ओ एन इज 2Vs/n पाई साइन एन ओमेगा टी। आई ओ एन क्या हो जाएगा, वी ओ एन बाय जेड, ठीक है। जेड एन लिख लेते हैं। सो जेड एन क्या होगा, आर प्लस आर एल लोड के लिए क्या हो जाएगा, एल एक्स एन, आर एल सी के लिए मान लेते हैं तो लाइक दिस, आर एल सी के लिए ये हो जाएगा जेड एन, ठीक है। इसको मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखूं तो मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। जेड एन मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल एन माइनस एक्स सी एन का स्क्वायर, एंड फाई एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स एक्स एल एन माइनस एक्स सी एन बाय आर, ये हो जाएगा, ठीक। सो आई ओ एन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2Vs/n पाई साइन एन ओमेगा टी माइनस फाई एन जेड एन को मैंने यहाँ पर लिख दिया, जेड एन का जो एंगल था यहाँ पर लिख दिया माइनस फाई एन, और इसका मॉड लिख लिया जेड एन का नीचे। सो दिस विल बी द करंट, ठीक है। सो दिस इज द सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। In next class lecture we will see single phase full bridge inverter with both R and RL load. Thank you.